last session of the Visual and Window Programming Lab, we have started to do the discussion on how can we make a TextPad application, right? So TextPad actually it is the application where number of controls new, right, which we have not discussed yet that we are using. So basically, what type of new control which we have discussed in that particular application. So see, first thing that is we have learned how to use a reach text box, right? So apart from the text box, in fact, we have used that text box in many of our application. But the thing is a new control which is called a reach text box, which supports a reach text format, right? Let's suppose if we'll talk about a text box, then it supports txt, it's a text format. And when we are talking about a reach text box, it supports rtf, that is called a reach text format. So that new control which is called a reach text box we have learned. Along with that, we have learned how can we deal with menus, right? Then we have discussed how to deal with a different type of dialog boxes such as file open dialog box, save dialog box, color dialog box, and font dialog box, right? Okay. So obviously I got change in my pc, so that previous application whatever we have made during our class, it is not available right now. So I'm just starting from the scrap, right? But now we'll not go into the detail of what reach text box is, and what is shortcut, and what is access key and all, right? Okay. So before sharing the screen and going into the detail of our today's discussion, I would just like to confirm, may I audible? Yes. Okay, fine, good. Okay, so let me share the screen and we'll start the Visual Studio. So here what we will do is we'll just create a new project. Okay. And in this project, we'll choose the language to be Visual C Sharp Windows application. And here, right, you can give any name to your project. For example, we are designing a text pad. So we can say my text pad application. Okay, fine. Now you just click on OK button. So your solution will be created, and within the solution, there will be one project is there. Under that project, you are getting the form. Okay. Fine. Now, what we need to do is, first of all, we just need to change the caption of the form, right? And for that purpose, we'll just go into the property of the form. Okay. So here we have the property, right? And we'll go or modify the text property. So here we will write, say, my text pad application. Fine. Okay, now under this what we have to do is we just have to put a reach text box. Okay, so if you are going into the standard control, you will get the reach text box, right? So it is here. You just do the double click and that reach text box has to be placed. Now you just need to go into the doc property, right? So here you have the doc property, and in the doc property what you need to do is you just have to choose this option. This is called a field. Okay, this is for sidebar, this is top, right? So here we are taking this one, right? So that is field. Now why we have done this, because
when you stretch the form, automatically your reach text box, will be stretched. Fine. And this is what actually we need. In the notepad, we are getting the same thing. In the wordpad, we are getting the same thing. Okay, fine. Now, after setting the doc property, what we need to do is we just have to put or configure our different menu options, right? So let me take a main menu bar. So it is here, main menu strip. You just do the double click, and now what you need to do is you just have to start designing a menu. So obviously we have discussed in the last session that in the main menu, what we have to do is we just have to provide access keys, right? And how can we give a access key? So access keys are those keys which are actually represented by underline to a particular character, right? Now suppose I want to create a menu here which is called a file menu, right? And I want to give access key to F, right? That means when user is pressing Alt and F, the file menu has to be open. So what I will do is I will just give end person and then I'll type file. Okay. So the character before that character, if you have return end person, then that character will be treated as a access key. Okay. Now here we will provide the various option. For example, new, then open, then save. Okay, one more separator, then save as. Okay, again separator, and finally exit. Okay, now I want to design the edit menu. So here I will type say end person E DIT, right? So here E will be your access key. So whenever user is pressing Alt and E, at that time whatever code you have written, this edit menu gets open, right? Fine. So here we will provide the option like cut, then copy, then paste. Okay, then we can say undo redo. Fine, undo, then redo. Okay, then here again separator, and then we'll put find replace, right? So find and replace. Fine. Now here we'll design the format menu. Now see, I'll not give a access key to F here, right? Because F is already in use, right? When user is pressing Alter and F, obviously file menu will be open. So here we need to choose the another access key. So what I will do is I will write F, then end person, then O. So here O will be access key, right? So suppose if user is pressing Alter and O, at that time the format menu gets open. Okay, now in the format menu what thing we have to provide, will provide, let's say bold. Okay, then italic. Okay, then underline. Okay, then here we can say font, right? So font will be there, then here color will be there. Okay, so these are the different options which we are providing. Apart from this, if you feel any other option to be there, you can add that option, right? Fine. Now here let's suppose if user is running the form, your form will looks like this. Fine. And suppose if user is pressing alter button, so you will get the underline in every menu, right? For the file menu F, for the edit menu E is there, and for the format menu O is there. Now suppose if user want to access format menu, so after pressing alter, user will press O and the format menu gets open, right? Similarly, escape. Okay, again if user want to open edit menu, user will press first alter and then E, right? So the edit menu gets open, right? So this is called access keys. The another key is what? Shortcut key. How can we give a shortcut key? For example, if user is clicking on a new, right? Or suppose if user is pressing suppose control N, then this code, whatever we are going to write on this new, that has to be executed, right?
Okay, so for that purpose, you select this new and then go to property. Here you will get a shortcut keys. So you choose a control and then here you press N. Okay, then you press enter. Make sure here control plus N has to be there, right? Then here open. So for the open, I just want to provide control and O. So you expand this, select control and then O. Fine. So control and O, that is for the open. Then here save option is there. So provide the save shortcut key, that is control and S. Fine, and so on. Similarly, here, suppose if you want to give cut, copy, paste, right? Control X, Control C, Control V, right? Control Z, Control R, right? So that type of thing you can provide, right? Okay. Now here, the shortcut key is visible, right? Suppose if you want to assign the shortcut key, but you don't want to show that thing. So here there is a property which is called show shortcut keys, right? If you are changing it to false, shortcut key will be there when the user is pressing control S. Obviously save has to be executed, right? The code whatever you are going to write on the click event of this particular menu strip will be executed. But the thing is, user cannot show what is actually the shortcut key, right? So here it's your choice whether you want to show that thing, right, or you don't want to show, right? So if you don't want to show कि भाई मेनू में दिखना नहीं चाहिए, हाँ शॉर्टकट की वो चलना चाहिए लेकिन दिखना नहीं चाहिए मेनू में, तो फिर आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, शो शॉर्टकट कीज. ओके, नाउ ठीक है, चलो नाउ वी विल जस्ट गो अहेड एंड विल जस्ट रन. Fine. Now suppose if user has type anything here and suppose if user is clicking on a file then new, then what happened? This thing has to be erased, right? Whatever content is there within your reach text box, that has to be cleared and the focus has to be shifted in the reach text box. So for that purpose here we will just write the code on the click event of the new tool strip menu item, right? So here you just type say reach text box one dot clear. So clear is the method. Fine. Then reach text box one dot focus. Okay. So this will simply focus. Clear? Okay. So this thing is done. Okay. Suppose if you have written anything here, okay, then you go to the file menu.
Okay, students, sorry, actually the system gets restarted. Fine. So again, I'll just share the screen. Let me open the Visual Studio. Okay, apart from the text box, is there any other program is there which is in the unit number 2 and we have not gone through that particular program? Have you seen the syllabus? Students, I am talking to you. Hello, may I audible? Hello, students, may I Yeah. audible? Okay, fine. Okay, is there any other program is there which is we have not discussed, which is there in the unit number 2? Because rapidly we just have to complete a unit number 2 and then we need to move to the unit number 4, right? Where the database connectivity and all that thing has to be there. Okay, so we'll see later on. Let us check whether the coding we have written is here or not. Yeah, it is there. So let me run now. Now see if you have typed anything here, and then suppose if you click on file and new, you will get the reach text box to be clear. Not only that, suppose if you have typed here anything, and if you don't want to go into the menu, right, directly if you press control and n, then again the same thing happens, right? So basically when we are pressing control and n at that time this thing happens, because the thing is we have given a shortcut key to the new option, right? So whenever the user is pressing control and then the shortcut key will redirect the user to the coding which is written on the new manuscript, right? So that coding will be automatically executed. Okay, now I think in the last session we have discussed many different type of dialog boxes, right? So here to open the dialog box we need a open dialog box. To save the dialog box again we need a save dialog box. For save as again save dialog box, right? In the format menu to show the font and color dialog boxes, we need a font dialog box and color dialog box, right? So what I'm doing is I'm taking all the dialog boxes here. So here you need to go into the category called dialog boxes, right? Dialogs. So here the separate category is there, and what you need to do is you need to take color dialog, you need to take font dialog, you need to take open file dialog, and you need to take save dialog, right? So that every dialog box will be there, and we can call them, right, whenever it is needed. Fine. Now I just want to write the code on the save as menu, right? So here, what we need to do is we just have to call first. Here, along with that, I am just declaring one variable, right? For example, string path, okay? And now here, what we will do is we just have to show the dialog box. But before dialog box, when you are using a file dialog box, any file dialog box, it's a file open dialog box or it's a save dialog box, you just have to set the filtration, right? So filter property you need to set. And how can we set the filter property? Here, it's a save as, so I have to show the save dialog box. So I will set the property for file dialog 1 dot filter.
Okay, now I want to filter three type of files, right? First is all reach text files. And what will be the extension of all reach text file? It will be a star.rtf, right? The second filter I want to give is all text files, right? So here we will write say all text files. And suppose if user is choosing this option, then what filter has to be applied? It is star.txt. Fine. Then the third is suppose if user want to see all the file, different type of files, then all files. And if all file is chosen by the user, then the filter has to be applied star.star, any extension, any file name. Okay. So this is what the filter we have set. Now, once the filter is set, the second thing is what? You just have to open the dialog box, right? So here I will just go ahead with the if reach text box one dot show dialog, right? And this is the method. If this returns uh, dialog result dot okay, if user is clicking on OK button, fine, or save button, then what we need to do is we just have to save the file, right? Okay. Uh, okay. This is here. We have to write save file dialog. Save file dialog one dot show dialog. Fine, this is equal to, so in the, here we are just showing the dialog box. Which dialog box? Save dialog box, right? So save dialog box will be appear, then user will give the name, user will check set the path, and when the user is clicking on OK button, at that time whatever content is there in the save file dialog, in the reach text box one, that we have to save to that particular path, right? So here what I will do is I have taken the variable which is a path. So path is equal to, we can say save file dialog one dot file name. Okay, file name. Fine. Now I have to save the file, right? So how can we save the file? So you just have to write a reach text box one dot save as save file where at this particular path. Okay, and the file gets saved, right? Okay, so this is done. Okay, now see, we'll just create the file. Say this is a file created by my text editor. Fine. And this is what the thing I want to save. So what I will do is I will click on file and save as. So it will show you the save as dialog box. Here, there are three options are there: all files, all text files, and all files. Fine. Okay, so I'll just go ahead with the reach text file and say first dot rtf, where we want to save this on the desktop, right? So you just select the desktop and now you just click on save, so your file gets saved. Now here, if you are going into the desktop, you will get your file. Okay, so here we have our file, right? You can open this file by using a textpad or wordpad, right? Sorry, wordpad or word or open office, right? So this file gets opened into the WordPad. वर्ड में भी ओपन हो सकता है, इट इज अप टू यू कि आपने आरटीएफ को बाय डिफॉल्ट कौन से प्रोग्राम में शो करा है, राइट? ओपन करा, फाइन. सो दिस इज डन. नाउ सपोज सेम फाइल को ओपन करना है तो ऑब्वियसली वी नीड टू राइट अ कोड हियर. फाइन. तो सेम टू सेम कोड होगा हमारा. फाइन. खाली सेव के बदले आएगा ओपन डायलॉग बॉक्स, राइट? सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. यहाँ पे सेव के बदले आई विल जस्ट टाइप ओपन. Fine. Rest of the thing will be fine. Now here again open file dialog one, right? Now here you just have to make the changes. अब यहाँ पे उल्टा काम करना है ना. reach text box one dot load file, आपको फाइल लोड करनी है. किस में से? जो
आपने ओपन फाइल डायलॉग लिया है उसमें से, लेकिन हम लोग उससे पहले क्या करें, अगर कोई फाइल ओपन हो रहा है तो ओपन फाइल डायलॉग 1 जो है उसका जो उसमें जो फाइल नेम है, राइट, फाइल नेम, इसको आप लोग स्टोर कर लो किसमें, पाथ के अंदर। पाथ करके हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, सो नाउ आई एम जस्ट कॉपिंग द पाथ फ्रॉम ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स, राइट, और वो पाथ के ऊपर से हम लोग फाइल को लोड करेंगे, राइट, सो दैट इज क्लियर, इट्स वेरी सिंपल, राइट, ओके। अब देखते हैं हम लोग फाइल ओपन करा के, तो फाइल ओपन। अब देखो यूजर यहाँ पे कैंसिल कर देगा तो कुछ नहीं होगा, फाइन, क्योंकि हमने क्या किया है, फाइल को लोड कब करा है, फाइल को हमने लोड तभी करा है जब वो ओके बटन क्लिक करता है, मतलब यस बोलता है, फाइन, सो ओके, again I am just choosing file open, and now I'll just go to the desktop, by default desktop last save किया था तो it is there. Now here you just select the file and click on open, so you will get your file to be loaded, right, okay. Now one more thing which we need to do, right, देखो करना क्या है, आ, थोड़ा सा ध्यान से समझो कि सपोज ये नया फाइल है, ओके, दिस इज अ न्यू फाइल। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, से दिस इज माय सेकेंड फाइल, ओके। अब सपोज यूजर सेव के ऊपर क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए राइट नाउ, स्टूडेंट्स, लॉजिकल सीक्वेंस आप लोगों को पता है या नहीं, दैट आई वांट टू सी, राइट, फिर कोडिंग की बात है, इफ यू आर नॉट अवेयर व्हाट हैज टू बी देयर, क्या होना चाहिए वही नहीं पता है तो फिर तो कोडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, राइट, ठीक है, आपको कोडिंग में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सपोज हमने एक नया फाइल क्रिएट किया एंड आई हैव रिटर्न सम डेटा टू इट, एंड नाउ आई एम चूजिंग फाइल एंड सेव, क्या होना चाहिए, सर अगर फर्स्ट टाइम हो तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। वेरी गुड, जो, हाँ, अगर फर्स्ट टाइम है तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, ठीक ना, एवरीबडी इज एग्री विद दिस, नो, ओके। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि भाई डायलॉग बॉक्स दिखना चाहिए, अच्छा, मानो कि एक बार डायलॉग बॉक्स आ गया और यूजर ने सेव कर लिया तो फिर क्या होना चाहिए, फिर खाली सेव होना चाहिए, वो डायलॉग बॉक्स की जरूरत हाँ, नहीं फिर है। खाली सेव हो जाना चाहिए, डायलॉग बॉक्स दोबारा सेव पे नहीं आना चाहिए, और इसीलिए मैंने पहले सेव एस पे कोडिंग किया, सेव पे कोडिंग नहीं किया है, राइट, क्योंकि सेव के वक्त ये दो ऑप्शंस होंगे, अगर फाइल ऑलरेडी ओपन करी है, ओपन की हुई है फाइल, राइट, या तो फाइल ऑलरेडी एक बार सेव हो चुकी है तो दोबारा आपको फिर डायलॉग बॉक्स नहीं दिखाना होता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो ये पाथ होगा ना वो नल होगा, ठीक, नल है इसका मतलब ना तो फाइल को ओपन किया गया है ना तो सेव किया गया है, समझो क्यों, क्योंकि अगर फाइल को ओपन करते हैं तो पाथ वेरिएबल में पाथ आ जाएगा फाइल का, ठीक, या तो फाइल को सेव करी है तो भी पाथ वेरिएबल में फाइल का नाम होगा, अगर पाथ वेरिएबल नल है इसका मतलब ना तो फाइल को सेव किया गया है ना ही फाइल को ओपन किया गया है, और अगर ये वाला केस है, अगर आपका पाथ वेरिएबल नल है, व्हाट इट मीन, वी हैव टू शो द डायलॉग बॉक्स, गेटिंग क्लियर। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हेन द यूजर इज क्लिकिंग ऑन अ सेव बटन, आई विल चेक इफ द पाथ वेरिएबल इज इक्वल टू नल, अगर पाथ वेरिएबल में कुछ भी नहीं है तो क्या करना, तो ये जो कोडिंग है ना ओपन टूल स्ट्रिप, ये, राइट, ये क्लिक हो जाना चाहिए, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल वी डॉट परफॉर्म क्लिक, ठीक, तो सेव एज वाला ही कोडिंग एग्जीक्यूट हो गया, ठीक, क्यों ऐसा एग्जीक्यूट हो गया, सीधी सी बात है, या तो फाइल ओपन हुई है या तो फाइल क्या हुई है, सेव, राइट, तो सेव या सेव एज कुछ भी हुआ है तो ये आ जाना चाहिए, ठीक, एल्स
अगर पाथ वेरिएबल में नल नहीं है तो इसका मतलब या तो फाइल ओपन की हुई है या तो एक बार सेव हो चुका है, तो पाथ है हमारे पास, है ना। फाइल का पाथ नोन है ना, अननोन नहीं है। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल आपको खाली फाइल को सेव करना है पाथ वाले वेरिएबल पे। ठीक, तो ये आपका कोडिंग खत्म। क्लियर, डन। अब देखो फाइल रन करते हैं, मैं नया फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये ब्लैंक फाइल है। अब यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कि भाई दिस इज माय सेकेंड फाइल। ठीक, और अब देखो मैं सेव के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सेव। ठीक, एक सेकेंड, व्हाट हैपन, वो पाथ वेरिएबल को नल, पाथ कैन नॉट बी नल, तो नल तो है। ठीक है, चलो ये नल डबल कोट्स नहीं चलाता है, तो यहाँ पे नल लिख के देखते हैं, राइट। Fine, let us test it again. So, तो उसने क्या किया, डायलॉग बॉक्स बता दिया हमको। ठीक, अच्छा चलो मैंने इसको सेव किया सेकंड और फिर डेस्कटॉप। ठीक, और फिर मैंने इसको एक मिनट ओपन, ओ गड़बड़ किया हमने। एक्चुअली ओपन वाला कोडिंग नहीं फायर करना है, ओपन का हाँ यहाँ पे सेव टूल ट्रिप होना चाहिए, सेव एज वाला टूल ट्रिप। ठीक, कि वो ओपन का कोडिंग फायर कर रहा है, यह सेव एज वाला जो कोडिंग है वो परफॉर्म होना चाहिए। ठीक, अब देखो फिर से फाइल से, दिस इज माय second file, okay, and now I'm just clicking on file and save, so it is showing the dialog box, save as dialog box आया। Here you write say second, desktop पे सेव करना है तो choose the path and finally you just need to click on save button। ठीक, अब देखो ये फाइल एक बार सेव हो गया। okay, now suppose if I'm typing this is second line of my file, मैंने एक दूसरा लाइन ऐड किया। now if I am clicking on a save button, एक सेकेंड फिर से, we'll just check, we'll put the debug mark and we'll just say, अच्छा उस, अरे यार गड़बड़ कर दिया हमने, लोड फाइल नहीं सेव करना है ना, डॉट सेव फाइल एज दिस पाथ, है ना। वो ओपन वाला कोडिंग आगे था तो उसी का हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, चलो नाउ व्हाट वी विल डू, सेकंड फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड लेट्स विल गो अहेड, विल मेक दी अनदर फाइल, राइट। सो लेट्स सपोज दिस इज सेकेंड फाइल, ओके। तो ये फाइल हमने क्रिएट किया। नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन सेव, डायलॉग बॉक्स आया, वी आर जस्ट सेविंग दिस फाइल एज अ सेकेंड एंड वी आर जस्ट पुटिंग इट ऑन द डेस्कटॉप, तो ये सेव हो गया। नाउ सपोज दिस इज अनदर लाइन ऑफ इट। ठीक, अगेन इफ आई एम क्लिकिंग ऑन सेव, देखो दोबारा डायलॉग बॉक्स नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो डायलॉग बॉक्स नहीं दिख रहा है लेकिन आपका फाइल सेव हो गया। फाइन, कैसे पता चलेगा, यू जस्ट क्लोज इट, run it again, file, open, you go to the particular file, second, देखो यू आर गेटिंग बोथ द लाइन। अब देखो मैंने फाइल को ओपन किया है, फाइन। अब मैं इसमें कुछ एडिटिंग करता हूँ, दिस इज थर्ड लाइन, ओके। अब क्या वो सेव डायलॉग बॉक्स आना चाहिए, अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो नहीं आना चाहिए, राइट, क्योंकि फाइल ऑलरेडी ओपन के कर दी है, तो ओपन करते वक्त वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द पाथ, तो दोबारा पाथ पूछने की जरूरत नहीं है। फाइन, क्लियर, जस्ट क्लोज दिस, रन दिस। सर हाँ हाँ बोलो। ये डायलॉग सेव डायलॉग्स बॉक्स वाला फिर से समझाना, कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्या हुआ, देखो नॉर्मली प्रोसीजर को समझो पहले।
सेव डायलॉग बॉक्स में डायलॉग बॉक्स कब दिखना चाहिए, कब नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो देखो, अगर फाइल आप एप्लीकेशन हो ऐसा समझ लो, तो आप तब डायलॉग बॉक्स नहीं शो करोगे जब आपके पास पाथ है, ये समझ रहे हो ना, यू आर एप्लीकेशन, है ना। तो अगर आपके पास पाथ है तो आप नहीं मांगोगे दोबारा, तो आप डायलॉग बॉक्स शो नहीं करोगे। एक्चुअली डायलॉग बॉक्स शो करने का रीजन क्या होता है, डायलॉग बॉक्स वी आर शोइंग बिकॉज वी डोंट हैव अ पाथ, सो वेन एवर वी डोंट हैव अ पाथ एट दैट टाइम वी हैव टू शो द डायलॉग बॉक्स। क्लियर, फाइन। अब देखो, मान ले दिस इज a new file I'm creating, so this is my third file, okay। अब ये तो न्यू फाइल है, तो अभी आप एप्लीकेशन हो, आप समझो, और मैं आपको बोल रहा हूँ भाई सेव करना है मुझे। सो यू आर एप्लीकेशन बट यू don't know where to save this file, what will be the name of this file। so what you will do is you will ask कि सर फाइल का नाम तो बताओ, मैं कहाँ सेव करूँ वो तो बताओ। ठीक, तो आप जब सेव डायलॉग बॉक्स को क्लिक करोगे वो सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक, अब देखो मैंने उसको सेव कर दिया जैसे कि थर्ड नाम से, राइट, थर्ड नाम से हमने सेव कर लिया, राइट। अब देखो मैंने सेव किया, तो मतलब आपके पास पाथ आ गया, मैंने पाथ दे दिया, फाइल का नाम एक बार आपको बता दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं इसमें मैं कुछ और ऐड कर रहा हूँ, से सपोज दिस इज सेकेंड लाइन, मैंने एक और लाइन टाइप की इसमें, राइट। अब मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ भाई इसको भी सेव कर दो, राइट। क्या आप मुझे पाथ पूछोगे? नहीं। वाई? बिकॉज ऑलरेडी आई हैव गिवन, जब फर्स्ट लाइन मैंने टाइप करके सेव बोला तो आपने डायलॉग बॉक्स ओपन किया और मुझसे पाथ और फाइल का नाम ले लिया। अब वही पाथ वही फाइल के नेम को आपको सेव करना है खाली। तो जब हम लोग फिर से सेव करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आना नहीं चाहिए, खाली फाइल वो जगह पे सेव हो जानी चाहिए। क्लियर? अब समझ आ गया, क्लियर हो गया ये? यस, Yes. हाँ। अब दूसरी बात देखते हैं हम लोग, है ना, दूसरा केस देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे जाके क्या किया, फाइल को ओपन किया, तो ये अपने ओपन डायलॉग बॉक्स बता दिया कि भाई कहाँ से ओपन करना है, मुझे नहीं पता है। हम्म, कौन सी फाइल ओपन करनी है मुझे नहीं पता है, तो आपने क्या किया, मुझे डायलॉग बॉक्स दे दिया। अब मैं डेस्कटॉप पे गया, फिर मैंने यहाँ से जाके फाइल सिलेक्ट कर ली कि भाई ये फाइल मुझे ओपन करनी है, थर्ड वाली। तो मैंने आपको पाथ दे दिया, तो आपने फाइल तो लोड कर दी। अब मानो इसके अंदर मैं और एक लाइन ऐड करता हूँ, दिस इज थर्ड लाइन। आप समझे यहाँ पे? तो अब मैं अगर बोलता हूँ कि चलो ये मैंने जो तीसरी लाइन लिखी उसको वापस सेव कर लो, तो मैंने सेव का बटन क्लिक किया। अब क्या आप मुझे पाथ पूछोगे कि सर कहाँ सेव करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने जब ओपन करने का बोला तभी आपने मेरे से पाथ ले लिया है, तो आपको पता है पाथ कौन सा है, फाइल का नाम कौन सा है। तो अब देखो मैं यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे तो डायलॉग बॉक्स नहीं आना चाहिए, फाइन। क्योंकि आपको पता है थर्ड वाली फाइल डेस्कटॉप पे जो है उसी को सेव करना है। और कब आपने ये पूछा मुझसे? जब मैंने फाइल को ओपन किया। तो जब हमने फाइल को एक बार सेव कर लिया है और फिर उसमें कुछ एडिटिंग होता है और फिर यूजर सेव का बटन फिर से प्रेस करता है, तो दोबारा पहली बार आना चाहिए डायलॉग बॉक्स, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार फिर डायलॉग बॉक्स नहीं आना चाहिए। एक बार पाथ यूजर ने दे दिया तो फिर वो पाथ पे आपको सेव करना है, दैट्स इट। क्लियर? वैसे ही अगर यूजर ने फाइल ओपन की है, तो जब ओपन की है उसने फाइल तो आपको पाथ बता दिया, और अगर पाथ बता दिया तो उसमें यूजर ने कुछ भी चेंजेस किए फिर वो सेव कर रहा है तो भी डायलॉग बॉक्स नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ओपन किया यूजर ने तब आपको ऑलरेडी आपको पाथ यूजर बता चुका है, तो बार बार पाथ लेना नहीं है अगर यूजर ने एक बार पाथ आपको दे दिया है। अब समझ आया लॉजिक? Yes. ओके। अब कोडिंग में क्या किया हमने, कोडिंग में हमने कुछ नहीं किया है। देखो सेव एज डायलॉग बॉक्स जब भी सेव एज पे यूजर क्लिक करेगा आपको कुछ नहीं देखना है, डायलॉग बॉक्स दिखाई देना है, राइट। सेव एक्स पे हर बार डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक, सेव करने के लिए। क्योंकि सेव एज का मतलब क्या होता है, एक फाइल अगर एक जगह पे है और आपको वही फाइल को सेव एज करके दूसरे लोकेशन पे भी सेव करनी है तो सेव एज करोगे, या एक फाइल एक लोकेशन में है और आपको दूसरे नाम से वही की वही फाइल सेव करनी है तो आपको फाइल का नाम या तो पाथ लेना ही है। तो सेव एज ऑप्शन में हर बार आपको डायलॉग बॉक्स दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने सेव एज में डायलॉग बॉक्स दिखा दिया है, ठीक। इसमें हमने और कुछ नहीं किया, हर बार डायलॉग बॉक्स ये दिखेगा जब भी सेव एज करेगा यूजर। अच्छा,
जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ पाथ वेरिएबल क्या है, नल है। ठीक, अब यूजर जब सेव बोल रहा है कि मुझे सेव करना है, तो हम लोग चेक करते हैं क्या पाथ नल है। पाथ नल कब हो सकता है, जब नई फाइल है। तो अगर फाइल ऑलरेडी एक बार सेव हो चुकी है या तो यूजर ने फाइल को ओपन किया है, तो पाथ वेरिएबल नल नहीं होगा। देखो यहाँ पे जब फाइल ओपन हो रही है, हम लोग पाथ वेरिएबल में फाइल का नाम स्टोर कर रहे हैं। जब सेव हो रहा है, हम लोग पाथ वेरिएबल में फाइल का नाम ले रहे हैं, राइट। तो पाथ वेरिएबल अगर नल नहीं है तो फाइल सेव होनी चाहिए। लेकिन अगर पाथ वेरिएबल नल है तो फिर वो ही वाली चीज, डायलॉग बॉक्स दिखाओ। तो ऑलरेडी वो कोडिंग हमने यहाँ पे किया है, इसको मैं कॉल कर देता हूँ, दैट्स इट। क्लियर। तो एकदम सिंपल है। अब देखो, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे फाइल और ओपन किया, किसी फाइल को मैंने फर्स्ट फाइल को ओपन किया, मेरे पास फर्स्ट फाइल आ गया। अब मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो वो मुझे नहीं पूछेगा पाथ, लेकिन सेव एज करूंगा तो वापस डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक, और ऐसा ही होता है कोई भी एप्लीकेशन लो, सेव एज जब भी करोगे डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा, राइट। सेव करोगे तो वो चेक करेगा कि क्या आपने पाथ दिया है, क्या आपने फाइल को पहले सेव किया हुआ है या तो फाइल को ओपन किया है। अगर है तो डायलॉग बॉक्स आपको नहीं देगा। ठीक, तो यही चीज हमने की है। आई थिंक कोडिंग समझ आ गया सबको। हम्म, अभी भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो पूछ लो, कंफ्यूज मत हो। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि अगर आपको बिजनेस लॉजिक इसका पता है कि कब क्या होना चाहिए, देन द थिंग विल बी सिंपलर, राइट। ओके, तो सेव और सेव एज अच्छे से समझ आ गया ना स्टूडेंट्स? Yes. ओके, गुड गुड। हाँ, ओके। सो एग्जिट पे क्या कोड लिखना है, दैट्स यू नो, इट इज दिस डॉट क्लोज, सॉरी दिस डॉट क्लोज। फाइन, तो ये एप्लीकेशन को एग्जिट कर देगा और ये मेथड है तो पैरेंथेसिस। ठीक है, अब एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे लिखना है रीच टेक्स्ट बॉक्स डॉट कट। ठीक, खत्म। फिर कॉपी पे जाए, रीच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट कॉपी, राइट। कॉपी मेथड है, कट भी मेथड है रीच टेक्स्ट बॉक्स के। पेस्ट पे क्या लिखेंगे, रीच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट पेस्ट। ठीक, ओके। अंडू पे क्या लिखेंगे, अंडू पे देखो पहले तो चेक करना पड़ेगा अंडू क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज अंडू स्टूडेंट्स? क्या हम कोई बोलतू डिलीट नहीं? की हुई फाइल वापस। हाँ, डिलीट की हुई फाइल नहीं बेटा, एक्चुअली आपने कुछ एक्शन परफॉर्म की, राइट, आपके फाइल में, और आपको लगा कि ये नहीं करनी थी मुझे, ये गलत हो गया कुछ, तो आप प्रेस नॉर्मली करते हैं हम लोग कंट्रोल जेड, तो जो आपने लास्ट एक्शन ली थी वो अनडन हो जाएगी। मतलब वो जैसे कि नहीं की थी वो स्टेज में कंप्यूटर पहले पहुंच जाएगा। जैसे कि आपने कुछ कॉपी किया और फिर पेस्ट किया और फिर पता चला कि ओ यार ये तो नहीं पेस्ट करना था, तो आप कंट्रोल जेड कर दो या तो अंडू दबा दो, तो क्या हो जाएगा, वो जो पेस्ट किया था ना वो वहां से हट जाएगा और पहले था वैसा का वैसा हो जाएगा। तो देखो अंडू का मतलब जो लास्ट आपने डू किया है, लास्ट जो आपका वर्क है उसको अनडन करना है ना। अंडू इसका मतलब होता है अनडन। अब अनडन करना है तो कुछ डन किया होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जैसे आप फाइल सीधी ओपन की, ना आपने कॉपी पेस्ट किया है ना और कुछ किया है, और आप अंडू अंडू करोगे तो क्या अंडू होगा, तो कुछ डू है तो अंडू कर सकते हैं, राइट। तो पहले हम लोग चेक करेंगे इफ रीच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट कैन अंडू, ये बूलियन मेथड है, राइट।
कैन अंडू, अगर अंडू हो सकता है, देखो ये सी शार्प का माल है, इतना तो समझ ले भाई कि ट्रू है तभी। फाइन, तो रीच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट अंडू। फाइन, अच्छा, कैन अंडू इज अ प्रॉपर्टी, ठीक, चलो ओके। तो अगर रीच टेक्स्ट बॉक्स अंडू हो सकता है तो उसको अंडू करो, ठीक। मतलब कुछ डू किया है तो अंडू हो सकता है ना। जैसे कि नहीं तो फिर क्या होगा, देखो अब ये फाइल ओपन किया और यूजर सीधा एडिट में जाके बोलेगा अंडू। अरे भाई, ना तो तूने कुछ टाइप किया, ना कॉपी पेस्ट किया, ना कुछ भी किया है, तो अंडू वो क्या करेगा। तो देखो, आप डायरेक्टली ये इफ कंडीशन नहीं स्पेसिफाई करोगे और सीधा ये बोल दो कि अंडू करो, ठीक, तो कंप्यूटर तो अंडू करने जाएगा, लेकिन अंडू करने के लिए कोई एक्शन तो होना चाहिए। कोई एक्शन नहीं है, यूजर ने कुछ किया नहीं है, कुछ टाइप नहीं किया है, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया है, तो अंडू जो है वो एरर दे देगा। तो इसलिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि अगर अंडू हो सकता है तो अंडू करो, राइट। सी नाउ लेट मी ओपन द फाइल, सेकेंड थर्ड फाइल, ओके। नाउ इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और फिर मैंने यहाँ पे एडिट करके किया पेस्ट, ठीक। अब मैं फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, एडिट करके किया पेस्ट। अब मैंने कुछ एक्शन परफॉर्म की है ना, कुछ कॉपी पेस्ट ये से किया। अब मुझे ये नहीं करना था, ये तो 2 बार हो गया, देखो ये नहीं होना था। तो मैं यहाँ पे एडिट में जाके क्या कर सकता हूँ, अंडू, ठीक। और एक बार अंडू करोगे, इसमें एक ही बार अंडू, हाँ राइट, तो आगे वाला भी। तो जितने डू आपने किए हैं वो सब देखो लाइन वर्क में यहाँ पे आ गए। अब कुछ नहीं है, राइट, तो आगे कुछ नहीं होना है, राइट। फाइल ओपन करने वाला जो स्टेज था वहां पे आप आ गए, ठीक। तो अगर यहाँ पे जाके फिर से पेस्ट करोगे, अब नहीं करना था, गलत हो गया, अंडू कर दो, ठीक। तो दैट इज अंडू, ओके। नाउ कट पेस्ट को भी चेक कर ले, लेट एडिट कट, यहाँ से हट गया, पेस्ट, एडिट पेस्ट हो गया, फाइन। अब इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी, और फिर यहाँ पे एडिट पेस्ट, फाइन। तो देखो वो काम कर रहा है, डन, ओके। सो व्हाट इज अंडू इज क्लियर, फाइन। अब अंडू का उल्टा, आपने अंडू कर दिया और वो नहीं करना था, तो उसके लिए होता है रीडू, फाइन। कोडिंग क्या लिखोगे, वेरी सिंपल, इफ each text box 1 dot can redo is equal to true, redo अगर हो सकता है, reach text box 1 dot redo, ठीक, डन, ये हो गया, ओके। अब फॉर्मेट, आई थिंक बोल्ड या ये सब जो करना है, क्या करना है, आपको एक फॉन्ट का ऑब्जेक्ट ले लेना है, फॉन्ट FNT, दिस इज इक्वल टू reach text box 1 dot selection font,